वालेकुम, मेडिकल टॉक्स मेडिजी के साथ मैं हूं डॉक्टर अली। कोरोना वायरस डिजीज़ 2019 जिसे कोविड-19 के बारे में भी जानते हैं और उससे बच्चा बच्चा डरा हुआ है और उसने पूरी दुनिया में खौफ फैलाया हुआ है। उसी को देखते हुए हमारी टीम ने ये डिसाइड किया कि जो भी नई रिसर्च या आर्टिकल या जो भी वीडियोस अपडेट हो रही हैं, जो क्योंकि कोरोना वायरस इतनी पुरानी डिजीज़ नहीं है, ये अभी 2019 में आई है और इसकी रिसर्चेज और इसमें जो इंफॉर्मेशन की एडिशन है वो डे बाय डे हो रही है। तो उसी के बारे में जो रिसर्चेज आ रही हैं और जो भी आर्टिकल्स आ रहे हैं या वीडियोस आ रही हैं उस पर रिएक्ट करें, उससे एनालिसिस करें और आप लोगों को इजी वे में समझाने की कोशिश करें। तो जो हमारी आज की वीडियो है उसमें डे बाय डे किस तरह डिवेल्प होती है सिम्टम्स, इससे पहले कि मैं आप लोगों का और टाइम वेस्ट करूं, चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। At first, you might think it's a cold, and it could be, but COVID-19 could escalate. Here's what you need to know. According to the World Health Organization China Joint Mission on COVID-19, as of February 20th, 80% of laboratory confirmed cases were mild to moderate, 14% were severe, and 6% were critical. Just to be clear, a mild case of COVID-19 is not like a mild cold. The symptoms will still be pretty severe. Anything less than needing oxygen puts you in this category. Severe cases do need supplemental oxygen, and critical ones are defined by respiratory or multi-organ failure. The symptoms, treatments, and timelines of having the disease vary, depending on which category patients fall into. So let's break down what having COVID-19 looks like day to day for each level of severity. It can take as few as 2 or as many as 14 days after being exposed to the novel coronavirus for the first symptom to develop. Maximum 14 days. This is when it might feel like a cold or the common flu. Many patients develop fevers early on. The World Health Organization China Joint Mission saw that about 88% of people who had COVID-19 had a fever. Another study out of China showed that while only 44% of patients had a fever on admission to a hospital, 89% eventually developed one. But there have been some cases that led with gastrointestinal symptoms. Diarrhea, nausea, vomiting, and/or abdominal discomfort may appear a couple of days before respiratory symptoms. This isn't the norm, though, because COVID-19 is a respiratory disease. That means for most patients, the virus will start and end with the lungs. In the early days of infection, the virus invades lung cells. Specifically, this can damage the cilia, the hair-like projections that move around to keep airways clear of mucus and debris. When cells get infected, they die and shed off, adding to the debris and hindering your body's ability to keep stuff out of the lungs and trachea. The inflammation causes damage, and damage causes more inflammation, and this cycle could continue until there's no healthy tissue left. And inflammation might explain why a dry cough is one of the most common symptoms. Same goes for shortness of breath and phlegm production. Other symptoms that can appear around this time are fatigue, sore throat, headache, joint or muscle pain, chills, and a runny nose. By day 5, patients with pre-existing conditions might find that they have trouble breathing, and it usually takes about 7 days for a person to go to a hospital. Mild cases, though, usually clear up by this time. But those with moderate to critical cases will have developed pneumonia, which can range from non-life-threatening to severe. Recovery time for these patients could be anywhere from a few days to weeks. For some severe and critical cases, though, symptoms can escalate into acute respiratory distress syndrome. ARDS is an illness that happens when fluid builds up in the lungs. Inflammation triggers a flood of immune cells that are meant to target the infection. They're usually isolated to infected areas, but sometimes the body goes overboard, which is when the immune cells start killing anything in their path, including healthy cells. ARDS is often fatal. In critical cases, it can lead to respiratory failure, requiring advanced life support, and this is most likely when patients head to the ICU. ARDS treatment includes supplemental oxygen and mechanical ventilation. The goal is to get more oxygen into the bloodstream, since the lungs can't. When this treatment doesn't work, the lungs are basically too flooded to get any oxygen into your bloodstream. That's the cause of most COVID-19 deaths. And even when a patient survives this phase,
they could be left with permanent lung damage. SARS punched holes in some infected people's lungs, giving them a honeycomb effect. And these lesions have been seen in people affected by the novel coronavirus too. Early studies found that most people who die of the disease will do so within 14 to 19 days. And on average, people who recover are released from the hospital after 2.5 weeks. But with the most critical cases, recovery could take months. Once a patient is in the recovery period, it's possible that they could still be contagious. These people should work with their doctors and public health officials to determine when they're no longer a risk. As of now, there is no vaccine for the virus, so the best way to avoid getting sick is to avoid being exposed. COVID-19 spreads easily from person to person through coughing and sneezing, so wash your hands often and avoid close contact with people who are sick, and clean and disinfect surfaces that you use daily. COVID-19 should be taken seriously, but most cases are survivable, so stay home, stay clean, and don't panic. इस वीडियो में मैक्सिमम ये चीज़ बताई गई है कि अगर वायरस इंटर हो जाता है आपके लंग्स में, फेफड़ों में इंटर हो रहा है, तो वो उसकी एपिथेलियम को डैमेज करेगा और साथ सीलिया वो सेल्स होती हैं, प्रोजेक्शंस होती हैं, हेयरी लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो आपकी स्पूटम या कोई भी फ्लूइड प्रोडक्शन या फॉरेन बॉडी आ जाती है तो उसको रिपेल करके बाहर निकालती है या इरिटेट करती है, तो वो सीलिया को डैमेज करते हैं। उसके बाद एपिथेलियल सेल्स को डैमेज करते हैं। तो सेल्स को डैमेज करने के बाद आपकी जो डिफियन पावर होती है, जो ऑक्सीजन हम ले रहे होते हैं, उसने ब्लड के अंदर जाना होता है, वो सारी की सारी चेंजेस आती हैं। ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही होती, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, वो वर्ष से वर्ष काम हो रहा होता है। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है, अच्छी बात ये है कि इसका सर्वाइवल रेट बहुत अच्छा है, इसका डेथ रेट बहुत कम है। और जो बुरी बात है वो ये है कि इसका स्प्रेड रेट ज़्यादा है। सर्वाइवल रेट तो ठीक है, लेकिन ये स्प्रेड बहुत जल्दी होती है और पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो रही है, आप लोगों को पता है। और जो मेन थिंग इसमें यही है कि अपने हैंड वॉश रखें, मास्क पहनें, पब्लिक प्लेसेस पे ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें। वही बात जो हर गवर्नमेंट कर रही है, हर कंट्री में यही हो रहा है कि सोशल बाइकआउट करें और घर में बैठे आइसोलेट होकर रहें। और इंशाल्लाह ताला थिंग्स विल बी गुड। उम्मीद बहुत अच्छी है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जो केसेस अभी तक आए हुए हैं अप टू डेट, जो आज की डेट तक 1300 केसेस आई थिंक हो चुके हैं। लेकिन बात ये है कि जो पहले केसेस आए हैं जो 4 वीक्स हो गए हैं और 2 to 3 वीक्स के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। और एक चीज़ ये भी बताइए कि जो पेशेंट रिकवर हो चुका है वो भी कंटेजियस है, वो अभी तक उसका रिस्क फैक्टर 0 नहीं हुआ, तो उससे भी अवॉइड करें और उसको भी कहें कि वो आइसोलेट होकर ही रहे। बाकी रिसर्च चल रही है, इसको टाइम बहुत कम हुआ है, तो बाकी जैसे जैसे रिसर्च आती है आप लोगों को इंशाल्लाह ताला गाइड करते रहेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आप किसी वीडियो पे रिएक्शन चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।